interrupted, by any one of these people. Rahul Gandhi's name should be changed to Reluctant Gandhi. He's reluctantly intelligent. He's a reluctant Hindu when it suits his purpose. He's a Janau-bearing Hindu. He's a reluctant politician of India, and I will say this with deep conviction and a lot of anguish, that his utterances don't behove someone whose family was involved in the independence movement of our country. When you go abroad, you stand united. When L.K. Advani was in the opposition and he was asked in the United Nations by people from the IFS that would you like to actually air your views, he says, मैं अपने विचार अपने देश के बारे में अपने देश में दूंगा. यहाँ मैं वही कहूंगा जो भारत को अच्छा दिखाए. Means it puts it in good light. What is problematic to me, Navika, is something even more serious. Rahul Gandhi has lost office because he's a disqualified member. He has lost power because their sense of entitlement is not in sync with New India. And his visceral hatred for Narendra Modi, sadly, is now transferring itself to a visceral hatred for India and everything Indian. That is dangerous. Because what you're seeing now is someone who makes it a point to belittle his own country, to propagate debased depravity of the kind that I've never seen before, and is a shame to not only India's political system, but to his own illustrious family, if you can call them illustrious. I would certainly say Jawaharlal Nehru was illustrious and will remain so in my book. When you go abroad, is this your only narrative? Is your narrative to shame our religions, our customs, our traditions, to knock at the temple of democracy, to say, oh, that these people build parliament, but they're ignoring education, they're ignoring healthcare? This man has the gumption to talk about the 1980s when the Nelly massacre happened under the Congress. What? When on October 31, there was a massacre of Sikhs, more than 3,300 people died, Sikhs. When his grandmother launched Operation Blue Star and actually went into the Darbar Sahib. These people are talking about the India which they don't like today. What did they do to the people? I'm not even getting to a debate with Tehseen and Shehzad because their facts are always on top. So I'm not going to get into how many airports, how many this. I can tell you I travel more than anyone on this panel. The position of India in terms of the pride that the Indian diaspora has in India, the confidence with which the Indian today travels, the way businesses have spawned, the way we are giving the world unicorn after unicorn, the way we are telling the world about digitization, the fact that today a Ramesh can actually sell you tender coconut through digitization. Let's be proud. You cannot decry every achievement of 1.4 billion people because you hate one man. Don't let hatred consume you. Let positivity consume you. Is there nothing right that Narendra Modi has done? Do you not want to compliment him for the Ujjwala scheme? Do you not want to compliment him for digitization? Do you not want to compliment him for doing what no country did during COVID? My point is, and Navika, you know this, I don't care about any goddamn political party. But give the devil his due. Cut people slack. Give credit where credit needs to be given. Today, we are a prouder country than we've ever been before. Have you forgotten, Navika, towards 2012, 2013, what happened with the telecom scandal? You haven't forgotten because you were part of breaking that news. Today, we stand more confident. Is it Narendra Modi's business to go to Khan Market to buy an opposition? If these Johnnies can't come together? On May 28, it was not a moment of Modi. It was a national moment. It was a moment of national pride. We were moving from a colonial building which was meant for earls and lords and moving to a building meant for Naya Bharat. Are we ashamed of that? You make fun of the spectre. You make fun of traditions. You make fun of Narendra Modi lying down prostrate, which we all do. I mean, my parents have passed, but I used to do that. How much are you going to mock your own country? How much are you going to mock your own citizens? And then you think you will ever come to power? Will you ever come to power by saying, jo aap pranam karte ho galat hai?
जिस भगवान को आप वर्शिप करते हो वो गलत है? Because he's in America, he's talking like an absolutely errant, irresponsible politician, which sadly, as I said, is not something I had expected. You know, I've always said he's intellectually innocent, but today I have to say that innocence is now bordering on the devious. It's bordering on a narrative that will destroy him. You know, you can't progress when you yourself are consumed by hatred, Navika. Progress emerges from affection, from positivity, and from unity. It doesn't emerge from isolation, arrogance, and anger. That's what sadly Rahul Gandhi has become. He embarked on Bharat Jodo. Today you're trying to break the Bharatiyata everywhere you go, and that's a sad thing. Well, let me get in Mr. Amit Jamai. Let's get into the facts, Mr. Amit Jamai. Have you forgotten the 1980s decade that Mr. Rahul Gandhi spoke about? Are Muslims worse off today in India? Are they like the Dalits in UP in the 80s? I want to ask you also the question on the growth story. The growth story, 7.2% India grows at, which is way above any of the Western countries, which is way above any of our neighboring countries, and which shows that this growth will be transferred to the people of India. Will it choose only the Hindus and not choose the Sikhs, the Jains, the Buddhists and the Muslims? When any scheme is given, is the religion of the person asked? So why is this narrative that is being made about the government and about India at this moment, why is it being made just for the narrow purpose of some vote banks? नाविका मैं तो सबसे पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। कोई सिडनी से राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा है, कोई लंदन से राष्ट्र के नाम से संदेश दे रहा है, और ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े हर 6 महीने 1 साल पे आप रिलीज करते हैं। इन आंकड़ों की सच्चाई अदम गोडवी ने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी हैं। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए नाविका मैम, आप चलिए कानपुर में, हजारों हजार जो एमएसएमईज थे वो बंद हो गए। वाराणसी में जो पूरा ये हैंडलूम का पूरा वहां से लेके जो फैजाबाद तक का सेक्टर आप चले जाएं, हैंडलूम इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स कर गई। आप चले जाइए मेरठ में, आप अलीगढ़ चले जाएं, आप कानपुर, आप सोचिए ज़ारा दुनिया का मल्टीनेशनल ब्रांड है, वो कानपुर में बन रहा है और 15 दिन फैक्ट्रियां चल रही पिछले 4 सालों में। सरकार ने आज तक नहीं बताया कि एमएसएमई जो उत्तर प्रदेश में क्लोज हुआ, कितने नए रोजगार के अवसर खुले। आज सबसे बड़ा विषय जिस वजह से नरेंद्र मोदी पूरे अपने देश में भारतीय जनता पार्टी क्रेडिबिलिटी खो रही है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और झूठे वादे। आप याद करिए, निर्मला सीतारमण साहिबा ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी क्या बोला भारत की संसद में कि 2 करोड़ का जो आंकड़ा था, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, हम 50 लाख नौकरी दे पाए। सवाल यह है कि आपने जॉब क्रिएशन में आपने कुछ नहीं किया। आपने कहा राम राज लाएंगे, लेकिन आप तो कॉर्पोरेट राज ले आए। इस देश के 60% वेल्थ पे इस देश के 2% पूंजीपतियों का कब्जा। हम पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है भारत के लोगों का, आज जिस तरह से चरम की महंगाई, महिलाएं सोचिए कि जो घर का बोझ उनके ऊपर होता है किचन में, वो जानती हैं कि 4,000 से 6,000 रुपए का उनके ऊपर बोझ है। तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं, जो रिटायर्ड हो रहे हैं पेंशन का कोई इंतजाम है नहीं, जॉब का गारंटी का प्रोग्राम कोई है नहीं। मैं उत्तर प्रदेश नाविका मैम, मैं पूर्वांचल में घूम कर आया। आप सोचिए कि नारेगा के वर्कर्स, जो सबसे हाशिए पर जॉब गारंटी का कार्यक्रम है भारत के सरकार का, 6 महीने से 1 साल, 6 महीने से 1 साल तक उनकी तनख्वाहें, चाहे योगी आदित्यनाथ की रिजीम हो, चाहे वो केंद्र सरकार की, तनख्वाहें नहीं आ रही उनकी। माननीय अखिलेश यादव जी ने 12-17 की सरकार में जो जॉब क्रिएशन किए, जो टीचर्स के थे, गांव गांव में हमने कंप्यूटर सेंटर खोले। आज तक टीचर्स की जो जब भी उनकी भर्तियां होती हैं, हर साल पर्चे लीक होते हैं। तो सवाल यह कि जो एक ग्रामीण भारत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या भारत के लोग हों, किसानी टूट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो
डिस्पैरिटी जो भारत में बढ़ी है उसके लिए अकेला कोई शख्स जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो कॉर्पोरेट परस्त नीतियां थी। राहुल गांधी जी की पार्टी तो इनका इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या फर्क है नाविका मैम जी? मुझे तो आज तक कुछ समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जी में समझ नहीं आया अमीक जमाई जी, इसीलिए तो 2017 में भी चुनाव आप हार गए, 2022 में भी आप हार गए। समझ ही तो नहीं आ रहा आपको कि जो आप कह रहे हैं और जो लोग चाह रहे हैं उसमें कितना फर्क है। लेकिन शहजाद पूनावाला कई सवाल पूछे हैं, जवाब जमीन के मसाइलों की बात की गई है। नाविका जी मुझे लगता है कि अमीक जमाई जी आपने सवाल पूछे, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आपको मैं टिप्पणी का समय दूंगी। नाविका जी मुझे लगता है कि ये जनता को सवाल का जवाब सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि डिस्टर्बेंस ना हो, क्रॉस टॉक ना हो। अमीक जमाई जी, डिसिप्लिन ऑफ द डिबेट, अमीक जमाई जी डिसिप्लिन ऑफ द डिबेट। आपने सवाल पूछे, सवालों का जवाब सुन लीजिए, आती हूँ आपके पास। अमीक जमाई जो मुख्यमंत्री बन गए, जो प्रधानमंत्री बन गए, खामखा वेस्ट ऑफ टाइम, तो यही लोग थे। ठीक है, कांग्रेस के ऑल राइट, ऑल राइट, पार्टी के लोग थे जिन्हें शहजाद पूनावाला पूछते हैं। ओके कैन वी हैव अ टाइम नाउ? नाविका जी अब मैं आंकड़े के साथ आपको सारी चीजें बताऊंगा। जब 2017 में सरकार छोड़कर गए अखिलेश यादव, 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश में 3.5%। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, ईपीएफओ का डेटा 5.28 करोड़ न्यू सब्सक्राइबर्स, उसमें से 23 लाख जॉब्स स्टार्टअप्स में। नाविका आई रिक्वेस्ट यू एंड योर पीसीआर, डू नॉट इंटरप्ट मी, आई एम गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई एम कोटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, दिस इज अनफेयर by the PCR also. All right, no, the PCR cannot take a call unless I tell them to. So please, you'll have to bear with me. Ameek Jamai ji, I'm lowering everybody's faders except Shehzad. Listen to the answer and then interrupt. Yes. Jobs created, EPFO data over the last few years, 5.28 crore new subscribers added. This means that people who did not have jobs at all till now, 23 lakh jobs created in startups, because startups went from 700 to 87,000. 35 crore mudra loans were given. Let's assume one for every 3 loans that were given, one job created. 1.1 lakh man days of jobs created because the highway construction was almost tripled. Between 2014 to 22, 7.22 lakh people got government jobs, in which 3.5 lakhs was given in railways. So now 10 more lakh jobs have been announced by the Prime Minister, which is being given in 70,000 bracket. MSME, the portal 2014 showed 52 lakh jobs. Today 2022, the jobs have reached 94 lakhs now. Let's come to poverty. Poverty pay, the poverty rate declined in the UPA period at 8.1%. Today it is declining at 12%. The highest poverty rate was kept below 1% because of the 80 crore people getting free rations. Agriculture, the budget left by the Congress was 1.46 lakh crore. Today it is 6 lakh crore. Congress gave MSP of 3.5 lakh crores in 5 years on wheat and rice. We have given 10.5 lakh crores. Mehengai, Congress gave average inflation of 10%. Today it's 4.5%. Well, the numbers speak for themselves. So let me ask